So good evening. So today we have a topic. Yes. So Mansi, Siddharth, Abhay, Abhijit, Kuldeep. Good evening and happy Diwali, happy New Year to all of you. It is not visible. Hello to everyone. बोर्ड नहीं दिख रहा है ना? डिस्प्ले वेट एक मिनट, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ. क्या हो गया इसको? Yes, I think now it's okay. Now okay. Yes. So let us start now. Kinetic, molecular theory of gases.
आवाज आपको ठीक से आ रही है ना? हाँ बेटा, जो साउंड क्वालिटी है इट्स ओके? Visibility is okay, or what about sound? Okay, I can. Okay. राइट. सो देखो, ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस है, ये मेन जो इसके कंट्रीब्यूशन थे, इसमें बर्नौली, जूल, क्लॉसियस, बोल्ट्जमैन, ये बहुत सारे लोग जो हैं मिलके, मैक्सवेल, इवन जूल, बर्नौली, है ना, फिर क्लॉसियस, बहुत सारे लोग जो हैं इसमें जो है, इन सब ने, इट वाज डेवलप्ड बाय ऑल ऑफ दिस. ठीक है ना? अब मेन पॉइंट इसमें जो है, ठीक है, वो हैं इसके पोस्टुलेट्स. और उन पोस्टुलेट्स के बेसिस पे वी कैन से कि ये जो आइडियल गैस है उसके लिए ये पोस्टुलेट्स काम में आते हैं. सो फर्स्ट पोस्टुलेट इज कि जो मॉलिक्यूल्स है, जो गैसेस हैं, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल. गैसेस आर मेड अप ऑफ small particles called molecules. जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं गैस के, उनको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स. क्योंकि उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है हर एक पार्टिकल की. ठीक है? और ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, उनका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ molecules, actual volume occupied by the molecules is negligible as compared to the distance between them, or as compared to the volume of the container. जिस भी वॉल्यूम में है, मतलब according to this postulate, it means if we have this container, okay, and we attach piston here, this is frictionless piston, right? तो ये बोलता है कि जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, इसके अंदर क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स, मतलब उनका जो वॉल्यूम है दैट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, और एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, और यू कैन राइट एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द container in which it is placed. Okay, that means if we go on pressing it, we apply pressure on the piston, so you know, by applying pressure piston goes down. अब ये कितना डाउन जा सकता है? कैन यू टेल मी? अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस, कहां तक ये जा सकता है? कैन इट बी जीरो? Yes, tell me. Can it be zero?
0 हो सकता है वो? हम पिस्टन को प्रेस कर रहे हैं, अब आपको ये बताना है कि जो पिस्टन है वो 0 तक जा सकता है? यस बेटा, आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि क्या वो 0 तक जा सकता है पिस्टन? पिस्टन को हम प्रेस करते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये पिस्टन प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीजेस। अब आपको यह बताना है कि ये वॉल्यूम कहां तक डिक्रीज हो सकता है, कहां तक जा सकता है पिस्टन? हाँ, अभय बोल रहा है कि नहीं जा सकता, रियल में नहीं जा सकता, एक्चुअल में इट कैनॉट गो अप टू 0। देखो 0 थोड़ी हो जाएगा, बिकॉज देयर इज सम इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम, दैट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, है ना। बट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग ये बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। तो वो क्या बोल रहा है कि 0 तक भी जा सकता है आइडियली, because he is talking about ideal gas, right? So ideal gas के अकॉर्डिंग जो इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम है, हम बोले दिस, if V is वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है वही हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस, राइट। अब ये जो है V, ये कंप्रेसिबल वॉल्यूम नहीं है ना, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि कुछ वॉल्यूम जो है दैट इज ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बी, जो कि आपने रियल गैस में पढ़ा होगा, वन टू वन इक्वेशन हमने कर लिया, बी इज एक्चुअल वॉल्यूम occupied by 1 mole of gas. So according to molecular theory of gases, it is 0. क्या बोला उसने, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम और द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो वो उसको वहां भी कंसिडर करता है जब वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज वेरी लेस, क्योंकि व्हेन यू गो ऑन प्रेसिंग द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो एक स्टेज आएगी यहां पे मॉलिक्यूल बिल्कुल इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद वो पिस्टन जो है वो प्रेस नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम, और मींस कंप्रेसिबल वॉल्यूम जो है that is equal to V minus B, and according to kinetic molecular theory of gases, B is 0. That is for ideal gas. So in ideal gas, compressible volume is equal to B. ये डिफरेंस है आइडियल गैस और रियल गैस में। दिस इज फॉर रियल गैस एंड दिस इज फॉर आइडियल गैस। कंप्रेसिबल वॉल्यूम फॉर रियल गैस इज V minus B, but for ideal gas compressible volume is V only, because for that gas B, that is the actual volume occupied by 1 mole of gas, is taken as 0, because that is neglected.
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, टू डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज इज फॉर आइडियल गैसेज। ये वाला पॉइंट किसी को डाउट है तो एक बार फिर पूछ लो। किसी को कोई डाउट है इस पॉइंट में? इस बेटा बोलो। मैंने आपको ये बताया कि कंप्रेसिबल वॉल्यूम जो है that is equal to V. V means volume of container, means whole volume is compressible. किसके लिए? For ideal gas. But same compressible volume is equal to V minus NV. अब N क्यों लगाया? Because let us take N moles of the gas in the container. So that is for N moles of रियल गैस। यस बेटा, इस पॉइंट में कोई आपको डाउट है? बोलो, ये वाला पॉइंट किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो। यस बेटा, ये वाला पॉइंट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज your differentiation between ideal gas and real gas is concerned. Okay, good. Now let us go to the third point. Third point is there is no force of attraction or repulsion between the gas molecules. So according to ideal gas kinetic molecular theory of gases, there is no force of attraction or repulsion between the gas molecules. In real, if you compress the gas, tell me what happened. If you compress the gas means molecules come closer, तो क्या होगा? molecules के बीच में बोलो, हमने गैस को कंप्रेस किया तो बताओ उनके बीच में जो है, हाँ ये बताओ कि गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, और गैस कैनॉट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। हाँ वेरी गुड, बट एक स्टेज के बाद वो रिपल्शन बहुत ही, जब वो बहुत ही क्लोज आ जाए तो रिपल्शन हो गया ना बेटा। मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में दे आर वेरी, they are far away from each other, they are at distance apart. When they come closer, first attraction increases, actually attraction increases, है ना? attraction increase हो जाएंगे, जो रियल सेंस में एक्सपीरियंस से हम बोलते हैं, है ना? जैसे एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो एलपीजी को कंप्रेस करके रखते हैं ना, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है ना? मतलब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? यस।
यस कन्वर्ट कर सकते हैं, बट दैट इज फॉर रियल गैस ओनली। अगर रियल गैस है, ठीक है, तभी गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। अगर आइडियल गैस है तो दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, क्योंकि उसने क्या बोला कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। सो दिस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैसेस। रियल में गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। देयर इज अ attraction, there are repulsion between the gas molecules. That means A van der Waals constant, वहां B था, A जो है A measures intermolecular attractions, राइट। तो मॉलिक्यूल्स के, हाँ, आइडियल मींस, देखो हम जो डेली लाइफ में रूटीन में चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज एक्चुअली द रियल। जैसे हम बात करते हैं आइडियल टीचर, आइडियल का मीनिंग समझा रहा हूं। आइडियल टीचर, आइडियल स्टूडेंट, आइडियल टीचर और आइडियल स्टूडेंट, इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो आइडियल टीचर का मतलब आपको पता ही है, आप लिखते हो बहुत सारे, राइट द एसे या मींस फ्यू वर्ड्स अबाउट आइडियल टीचर, तो आप लिखोगे जो कभी डांटे ना, जो सिर्फ प्यार से बात करें, जो कभी हमें मतलब ऑनेस्ट, ये वो बहुत सारी क्वालिटीज गिना दोगे ना। वैसे आइडियल स्टूडेंट की भी बहुत सारी क्वालिटीज गिनाओगे आप, है ना। बट एक्चुअल में जो आइडियल टीचर के बारे में लिखते हैं, सारी क्वालिटी थोड़ी हो सकती है उसमें, किसी कंडीशंस पे वो क्वालिटीज जो हैं आती हैं। कभी गुस्सा ना करे, ऐसा कभी हो सकता। हर दिन हर जो भी बोले सारे काम कर दे, आइडियल स्टूडेंट मीन्स भक्त, ऐसा भी नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, उस चीज को मानते हैं कि ये सेट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसे होने चाहिए। गैस में क्या होता है, अट्रैक्शन मिनिमम, अट्रैक्शन क्या होते हैं उनमें मिनिमम, तो हम बोलते हैं कि नेग्लिजिबल है। बट कभी नेग्लिजिबल तो नहीं होते ना। अगर मॉलिक्यूल किसी डिस्टेंस से पास आते हैं तो अट्रैक्शन भी हो सकते हैं, और बहुत ही पास आ जाते हैं तो रिपल्शन भी हो सकते हैं, है ना। तो आइडियल जो है, आज्ञाकारी स्टूडेंट, हाँ बस वही है यहां भी। आइडियल गैस मींस हम एक सेट जो है वो प्रॉपर्टीज हैं गैस की, वो हम बोल देते हैं कि ये होना चाहिए। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन ना हो सकता है कब, जब हम क्या करें कि उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दें, प्रेशर बिल्कुल लो कर दें, टेम्परेचर बड़ा हाई कर दें, तो ऐसा हो सकता है ना कि उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन ना हो। पॉसिबल है ना। वैसे ही वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम जो है वो भी नेग्लिजिबल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। कब, जब हम क्या करें, 10 मॉलिक्यूल ले, और 10 मॉलिक्यूल जिनका वॉल्यूम बिल्कुल नेग्लिजिबल है और पूरे एक रूम में छोड़ दें, तो उनका वॉल्यूम कहीं काउंट होगा। सरफेस पे अगर प्रेस करेंगे तो वो सरफेस से ही चिपक जाएंगे ना, वॉल्यूम 0 हो सकता है ना। ओके, तो मुझे लग रहा समझ गए आप। तो ए जो है इज 0 कब, फॉर आइडियल गैस,
and A is not equal to 0 for real gas. ठीक है, रियल गैस के लिए A हैज सम वैल्यू, बट आइडियल गैस के लिए इट्स वैल्यू इज 0. इसलिए याद होगा उसमें हमने लिखा है P प्लस A N स्क्वायर और स्क्वायर लिखा था. है ना, तो A की वैल्यू 0 होगी तो P हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा V माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी. आइडियल रियल गैस के लिए वॉन डेर वाल्स इक्वेशन होती है ना, ये रियल गैस इक्वेशन है ना. और यही रियल गैस इक्वेशन कैन बी रिड्यूस टू आइडियल गैस इक्वेशन. कब? जब A 0 हो, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, तो ये P रह जाएगा, और B 0, वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, तो इनटू V हो जाएगा इक्वल टू nRT. तो ये हो जाएगा आइडियल गैस इक्वेशन. आ गया ना, रियल का और आइडियल का डिफरेंस क्लियर हो गया, समझ गए. नाउ ये हो गया थर्ड पॉइंट. नाउ फोर्थ, ये बोलता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, द मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज in constant random motion. Molecules are always in constant random motion. They strike with each other and follow zigzag motion. That is called ब्राउनियन मूवमेंट. क्या बोलते हैं उसको? ब्राउनियन मूवमेंट. ठीक है, अब कैसे होता है कि ये मॉलिक्यूल है, मान लिया ये इस मॉलिक्यूल से टकराया, डायरेक्शन चेंज हुई, फिर in this way it continue to collide. That is, और दो कोलिजन के बीच के जो डिस्टेंस होती है that is called फ्री पाथ. ठीक है, और एवरेज फ्री पाथ निकालते हैं, वो अलग कंसेप्ट है, बट हमें सिर्फ इतना सा इसमें याद रखना है कि मॉलिक्यूल जो है दे आर ऑलवेज इन कांस्टेंट रैंडम मोशन. वो एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं एंड चेंज द डायरेक्शन एंड देयरफॉर फॉलो जिगजैग मोशन, और उसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट. राइट. फोर्थ पॉइंट, इज इट क्लियर टू यू? सबको क्लियर हो गया ये कैसे किया हमने? अब ये जो कोलिजन होते हैं, ओके, तो द कोलिजन्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स एंड with the walls of the container are perfectly elastic. What do you mean by elastic collisions? Perfectly elastic collision का मतलब क्या होता है? Can anybody tell? कोई बता सकता है
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब होता है? यस, perfectly elastic collisions means perfectly elastic collision का मतलब क्या होता है? perfectly elastic collision means, yes, anybody? बोलो सही। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है? नहीं, हाँ, वेरी गुड। आप थोड़े पीछे चल रहे हो मुझे लग रहा है, थोड़ा सा आगे आ जाओ। बीच में गैप ही रखा है मैंने। ओके, कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर आर परफेक्टली इलास्टिक मींस देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग collision, but there is रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, है ना, बट रीडिस्ट्रीब्यूशन अलग चीज है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, मान लिया एक मॉलिक्यूल है जिसकी 5 जूल एनर्जी है, ठीक है, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है जिससे वो टकराया, उसकी 10 जूल है, ठीक है। अब ये दो मॉलिक्यूल टकराए, आफ्टर द कोलिजन ये मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए, ठीक है ना। ये 5 जूल वाला जो है ना, उसके एनर्जी टेक की हो जाती है 8 जूल, तो इसकी कितनी हो जाएगी 7 जूल। इस टोटल सम जो है दैट इज 15 जूल, और इसका सम भी कितना है 15 जूल। टोटल सम ऑफ एनर्जीज रिमेन सेम, देयर इज नो लॉस। जैसे हीट लॉस होता है ना, अलग अलग टाइप की एनर्जी लॉस होते हैं, है ना, बट बोलता है यहां पे कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। क्यों ऐसा बोल रहा है वो? क्योंकि बोलता है कि अगर ये कोलिजन इतने ज्यादा होते हैं ना, कि अगर वो एनर्जी लॉस करने लगे तो एंड में तो वो नीचे बैठ जाएंगे आराम से, एनर्जी लॉस हो तो, है ना। और ये इसको क्यों बोलता है वो कि जिगजैग मोशन में हमेशा रहेंगे? क्योंकि ये बोलता है कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन देम। क्योंकि अगर ग्रेविटी इफेक्ट करेगी तो अल्टीमेटली वो तो नीचे बैठ ही जाएंगे। तो बोलता है ना तो ग्रेविटी का इफेक्ट होता है और ना ही उनकी एनर्जी में कोई लॉस होता है ड्यूरिंग कोलिजन, सिर्फ एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है ना। अगर कोई 10 जूल वाला 5 जूल से स्ट्राइक करता है तो एक की एनर्जी कम हो जाएगी, दूसरे की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, बट टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम। हाँ, वेरी गुड। टोटल सम जो है एनर्जी दैट इज रिमेन सेम।
Okay, so this is fifth point. Now sixth one. सिक्स्थ पॉइंट क्या है कि जो प्रेशर है, pressure of the gas molecule is due to the collision of molecules on the walls of the container. Yes, very good, Namita, Abhay, Abhijit, good beta. Walls of the container per unit area, because you know pressure is force per unit area. तो ये जो impact है, collision means impact of molecules on the walls of the container, right, per unit area. So that is called pressure. Okay, yes, ये भी हो गया. Now जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is directly proportional टेम्परेचर. यस, ये जो है टोटल पोस्टुलेट हो गया. पहला पोस्टुलेट क्या था कि जो गैस है दैट इज मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दोज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, और वॉल्यूम जो है ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम. They are always in constant random motion. That's why there is no effect of gravity on it. They are what we have done next, no effect of gravity. Then next point was, yes, collision is perfectly elastic. Okay, collisions are perfectly elastic. There is no loss of energy during collisions, only redistribution of energies takes place. Okay, and pressure of the molecules is due to the pressure of the gas is due to the collision, okay, between the collision of the molecules with the walls of the container. Or kinetic energy, average kinetic energy is directly proportional to temperature in Kelvin. So these are the postulates of kinetic theory of gases. Now after going through these postulates, let us draw the Maxwell-Boltzmann distribution of velocities, fraction of the molecules against the Maxwell and
Boltzmann distribution of Komalakshi. Hello. Velocities. Maxwell and Boltzmann distribution of speeds, velocities, even energies. तो इनका जो प्लॉट होता है ग्राफ, say this is fraction of molecules against velocity. So when we plot a graph between fraction of the molecules with the velocity, the graph is like this. So according to this graph, this is at temperature, let us take T1. Okay. Now according to this graph, fraction of molecules with very low velocity, fraction of molecules, that is delta n by n, fraction of molecules with very low velocities or very high velocities are very less. Fraction of molecules with very low velocities, like see here, very low velocities or very high velocities are very less. This is the first point of this graph. Second, as velocity increases, fraction of molecules increases till it reaches maximum. See, velocity increases and fraction also increases till it reaches maximum and then decreases, right? So the fraction of molecules having maximum, sorry, the velocity possessed by maximum fraction molecules with maximum fraction of molecules is called most probable velocity. Okay, fraction of velocity possessed by maximum fraction, that means this velocity which is possessed by maximum fraction of molecules is called most probable velocity. Okay, or most of the time it is denoted by alpha or simply U most probable. Okay, now and then it, see,
velocity increases, fraction of molecules increases till it reaches maximum, okay, and then decreases, right? Now what happened if temperature is increased? On increasing temperature, when we increase the temperature, what would happen? As temperature increases, velocity increases. That means molecules having low velocity rises and molecules having higher velocity further increases. So graph becomes like this, T2, that is T2 is greater than T1. That means most probable increases, but fraction of molecules having probable speed, the most probable velocity decreases. See, this fraction, here it is F1, then here it is F2, right? So T2 is greater than T1, but F2 is less than F1, okay? And most important point is area under the curve represents the total number of area under the curve represents the total number of molecules, okay? So area under the curve remains same even on increasing temperature, right? Even on increasing temperature, because area under the curve remains same. Why? Because total number of molecules remains same. Container is closed. So when we increase the temperature, area under the curve remains same. Okay. So these are the points. Now, out of these points, any doubt? Any doubt up to this? जो area under the curve that remains same even if we increase the temperature, but molecules with very low velocities and very high velocities are very less, or as velocity increases, fraction increases, reaches a maximum and then decreases, or when we increase the temperature, velocity, most probable velocity increases. That is, let us take it is alpha 1 and this is alpha 2. So alpha 2 is alpha 1.
velocity increases, but fraction of the molecules attaining most probable speed decreases. Yes, beta, any doubt? ओके, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है ना, और अब वी हैव 3 टाइप्स ऑफ स्पीड्स. तो ये हो गया अबाउट द कर्व. अब हम बात करते हैं 3 टाइप की स्पीड्स. एक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, सेकंड इज एवरेज वेलोसिटी, and third is root mean square velocity. तो जनरली मैंने आपको बताया, इसको डिनोट करते हैं हम अल्फा से और सिंपली राइट UMP. ठीक है. फॉर एवरेज वेलोसिटी आइदर वी यूज U और U average. For root mean square velocity we use mu or U RMS. Okay, so first most probable velocity. तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, दिस इज द, अभी डेफिनेशन किया मैंने, वेलोसिटी possessed by maximum fraction of molecules. Velocity possessed by maximum fraction of molecules. Okay, and its value is under root 2 RT by M, where R is gas constant, T is temperature in Kelvin, and M is molar mass. M is molar mass. Okay, so in this way we can calculate most probable velocity. Second is average velocity. You can write it as UMP or alpha. Average velocity can be determined by U or U average. Okay, so it is defined as if V1, V2, V3 so on are velocities of n gas molecules, then you know average, how to calculate average. Then average velocity is equal to V1 plus V2 plus V3 plus so on up to Vn, because we are talking about n molecules divided by n. Or if it is like V1 is the velocity possessed by
N1 molecule, V2 is velocity possessed by N2 molecules, V3 is velocity possessed by N3 molecules, and so on. Then average velocity is equal to V1 N1, V2 N2 plus V3 N3 plus so on, divided by N1 plus N2 plus N3 plus so on. Okay, and that is equal to under root 8 RT by pi m. RTM has same meaning as above. Gas constant T, temperature in capital M, molar mass, and pi 22 by 7. So this is average velocity. Now third one. Third is root mean square velocity. So root mean square velocity, it is denoted by mu or simply URMS. So root mean square, first we have V1, V2, V3 as velocities, okay, of and so on of n molecules, okay. Then their square, start from here, velocity, then their square, and then mean, then their mean for n molecules we take, and then their root. Okay, so that means URMS, or we can write mu, is equal to square root of V1 square, V2 square, V3 square plus so on, divided by n, and that is equal to under RT by m. Okay, so now compare these three, alpha, u, and mu. Most probable, average, root mean square. So it is equal to under root 2 RT by m. Second one, under root 8 RT by pi m. Third, 3 RT by m, right? So it is equal to under root 2 under root 8 by pi under root 3. So it is equal to 1.128 is to 1.224. That you have to remember. Okay. So that means out of these three, alpha is less than u is less than mu. Okay. Now if we compare it with mu, alpha is equal to 0.816 mu and u is equal to 0.9213 mu. Most probable speed is 0.816 times the root mean square speed, and average speed is equal to 0.9213 times the root mean square speed. So if we see the plot, it was like that or slightly.
like this. So this is alpha, then this is average, and next to it is a root mean square speed. If this is alpha, then this is average, and this is a root mean square speed. That is, alpha is less than average is less than a root mean square speed. So this is all about states of matter. We have completed the whole chapter. Exercise question number 16 I have recorded. I will share the video with you. All the exercise we have done. Any doubt in states of matter? In the next lecture we will start thermodynamics. Yes, any doubt up to this? Yes, beta. बोलो, यहां तक कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो. ओ हो के नहीं सो गए सारे? यस, एनी डाउट? ओके, कोई डाउट नहीं है. मानसी ने बोला है, बाकी पता नहीं कहाँ है. चलो, हाँ. और ये जो इक्वेशन थी पूरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें एक काइनेटिक गैस इक्वेशन निकल के आती है. उसकी डेरिवेशन मैं नहीं करवा रहा हूँ. इट इज नॉट इन आवर सिलेबस. अगर टाइम मिलेगा तो करवा देंगे, बट इट इज नन ऑफ योर बिजनेस बिकॉज इट इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज दी अदर, है ना. तो उसमें क्या होता है कि काइनेटिक गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल टू 1/3 m n म्यू स्क्वायर. ये म्यू क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. ठीक है ना. सिंपली म्यू लिखोगे. मैंने म्यू is a root mean square velocity that you know already, है ना. और n जो है that is total number of molecules. हाँ बेटा.